ॐ शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। श्रीमहागणपतये नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां श्रीहयग्रीवमुपास्महे। श्रीहयग्रीवमूर्तये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। उमाकोमलहस्ताब्जसम्भावितललाटकं हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पुष्करस्रजं। வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ஹரஹரோஹரா. லோகவீர்யம் மகாபூஜ்யம் சர்வரக்ஷாகரம் விபும் பார்வதி ஹிருதயானந்தம் சாஸ்தாரம் பிரணமாம்யகம். சுவாமியே சரணமையப்பா. வாகர்த்தாவிவ சம்பிரக்தௌ வாகர்த்த பிரதிபத்தயே जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्री पार्वती परमेश्वराभ्यां नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे श्रीनाथ नारायण वासुदेव। पीताम्बरं करविराजितचक्रशङ्ख कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशम् अनिशं हृदि भावयामि। कृष्णो रक्षतु मां चराचरगुरुः कृष्णं नमस्ये सदा। कृष्णेनैव सुरक्षितोऽहमसकृत् कृष्णाय दत्तं मनः। कृष्णादेव समुद्भवो मम विभो कृष्णस्य दासोऽस्म्यहम्। कृष्णे भक्तिरचञ्चलास्तु भगवन् हे कृष्ण तुभ्यं नमः। श्री गुरुवायूरप्पा शरणं। नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरणभ्यर्थितानपि अर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिं च। इत्थं निःशेषनभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वं क्षुद्रं तं चक्रवाटी ध्रुममभिलषति व्यर्थमर्त्यव्रजोऽयं। श्रीगुरुवायूरप्पा शरणं। श्रीभट्टपादम् अनिशं हृदि भावयामि। वंशी विभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। കൈരണ്ടും കൂപ്പി ഞാൻ വീണ്ടുമീറക്കുന്നു നീരജലോചന നിന്നോടായി. ഏതീനു മഞ്ഞനെ കുമ്പിടേണ്ടാത്തോരു പ്രീതിയിൽ നീ എന്നെ പാലിക്കന്നായി. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. വെൽക്കം എവരിവൺ. Good morning. So I think few people may not be able to join because some are celebrating Amni Autumn today. So, okay, we'll do a quick review, maybe one of 68 and 74. So, Jayashree, ninga irkela? Yeah, Rajesh. Okay, Sriram. Ninga era 68 panna mudiyuma? Ninga ilna Jayashree?
ஷூர் நான் பண்றேனே. எனக்கு அந்த ராகம் மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. எடுத்து விடுறாரு. And then 74 Srividya, if you can do 74. Yes. And then Priya and Sabita can be students for 75 today. Okay. All right. Sriram, yeah. Tava Vilokanat Krishna Gopika Janaha. Okay. Tava Vilokanat Krishna Gopika Jana Pramada Sangula Krishna Pangajekshana Amrudataraya Krishna Sambluda Iva Stimiti Tam Krishna Tvat Purogata. So அங்க ஒரே ஒரு ஸ்மால் கரெக்ஷன் ஸ்ரீராம். ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல ஜனாஹா வரும், அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன். ஓகே, பங்கஜேக்ஷனாஹாவா? இல்ல கோபிகா ஜனாஹா. கோபிகா ஜனா. தவ விலோகநாத் கிருஷ்ணா கோபிகா ஜனாஹா. இல்ல ஜனாஹா. கோபிகா ஜனாஹா. ஓகே ஓகே, keep going. ததனு காஷனா கிருஷ்ணா त्वत्कराम्बुजं सवति कृष्णति कृष्णा निर्विसङ्गितं कनपयोदरे कृष्णा सन्निधायसा पुलकसंवृता कृष्णा तस्तु शिशिरं तव विभो बरा कृष्णा कोमलम्बुजं निजकलान्दरे कृष्ण पर्यवेष्टयत् कलसुमुद्गतं कृष्ण प्राणमारुदं प्रतिनिरुन्धदीव कृष्ण अधिहर्षला अभगतत्रपा कृष्ण कापि कामिनी तव मुगाम्बुजात् कृष्ण भुगसर्वितम् प्रतिगृह्यत कृष्ण वक्त्रपङ्कजे निदतति कदा कृष्ण पूर्णकामताम्. Sriram, the second line or chinna question, prati grihayya, and double ya is there, so prati grihayyat. Yeah, it's okay. Pradigrihayat Krishna Vaktrapankaje Nitatati Kada Krishna Purna Kamatam Vikaruno Vane Krishna Sanvihayamam Abakadosika Krishna Twamihas Praset. Correct, Rajeshita? Correct, yeah. इदि सरोषया कृष्ण दावदेकया सजललोचनं कृष्ण वीक्षितो भवान् इदि मुदा कुलैर्कृष्ण वल्लभी जनैः सममुभागतो कृष्ण यामुने तटे मृदुकुसाम्बरैः कृष्ण कल्पिदासने कुसृणुबासुरे कृष्ण पर्यशोभताः. Sriram, the second line, the mridu kuchambarehi is there, right? So you can put that joining letter sound. So mridu kuchambarehi Krishna. Oh yeah, correct. அதுல அப்படிதான் போட்டிருக்கு, நான் தப்பா படிச்சிட்டேன். I'm sorry. mridu kusambarai krishna kalpidasane kusrunobo sure krishna paryashobhata. Correct? And the last line நீங்க first time கரெக்ட்டா சொன்னேன். இந்த குஸ்ருண பாசுரே கிருஷ்ண பரியசோபதாஹ. मृदुकुसाम्बरै कृष्ण कल्पिदासने कुसृणुबो सुरे कृष्ण पर्यशोभता. Again you're saying gusrunu bhosare, you're saying gusruna bhasure. Okay, நான் அதுல போடுறேன். Okay. मृदुकुसाम्बरै कृष्ण कल्पिदासदे कुसृणु बासुरे कृष्ण पर्यशोभता. कदिविदा कृपा कृष्ण के भी सर्वतो त्रिदतयोदया कृष्ण
ஓ கிருசித்தாவாது கேச்சிதாஸ்ரிதே. ஓகே ஓகே சார். கதிவிதா கிருபா கிருஷ்ணா கோபி சர்வதோ. சேஞ்ச் டு கேபி. கேபி சர்வதோ. கதிவிதா கிருபா கிருஷ்ணா கேபி சர்வதோ திருததயோதயா கிருஷ்ணா கேசிதாஸ்ருதே கதிசித்தி த்ரசா கிருஷ்ணா மாத்ருசேஷ்வ பீத்ய. அது அங்க மாத்ருஷேஷ்வ பீதி. ஓ மா ஓகே. அந்த தியா வந்து broken into பீதி and அபிஹிதோ பவான். ஓ யா இத்து இருக்கு இத்து அடிக்கல. ஓகே கதிசித்தி த்ரசா கிருஷ்ணா மாத்ருசேஷ்வ பீதி அபிஹிதோ பவான் கிருஷ்ணா வல்லவி ஜனைஹி ஐ குமாரிகா நைவ சன்யதம். அதுல ஒண்ணுமே இல்ல. இந்த குமாரிக்காக்கு அப்புறம் கிருஷ்ணா வேர்டு. ஓ மிஸ் பண்ணி. ஐ குமாரி அது எங்க கிருஷ்ணா வர சொல்லுங்களேன். இந்த குமாரிக்காக்கு அப்புறம் ஐ குமாரிகா கிருஷ்ணா. 8 and 9 10 last week, sorry we missed it, அதனால அத நான் மார்க் பண்ணல. Oh no worries. Sangeeta, do you want to try it? ரமேஷ் சங்கீதா ட்ரை பண்றீங்களா? நான் சொல்றேன். ஐ குமாரிகா கிருஷ்ணா நைவ சங்கியதாம் கடினதா மயி கிருஷ்ணா பிரம்ம காத்தரே. பிரேம காத்தரே. கடினதா மயி கிருஷ்ணா பிரேம காத்தரே மயி து சேதசே கிருஷ்ணா வோனு விருத்தயே கிருதமிதம் மயா கிருஷ்ணா இத்யுசி பவான். அந்த லைன் அந்த கடைசி இது மயா கிருஷ்ணா இத் யூச்சிவான் பவான். ஓ சரி கீழே நோட் பண்ணிக்க. கிருதமிதம் மயா கிருஷ்ணா இத்யுசிவான். யா கரெக்ட். மயி து சேதசே கிருஷ்ணா வோனு விருத்தயே கிருதமிதம் மயா கிருஷ்ணா இத்யுசிவான் பவான். You don't have to repeat it, but அந்த மயித்து சேதசோ, not சேதசே. Okay. மயித்து சேதசோ கிருஷ்ணா வோனு விருத்தயே கிருதமிதம் மயா கிருஷ்ணா இத்யுசி பவான். ஐநிஷம் யதாம் கிருஷ்ணா ஜீவ வல்லபாஹ பிரியதமோ ஜனே கிருஷ்ணா நோத்ருசோ மம தஹிதரம் யதான் கிருஷ்ணா ரம்யயாமி நீஷு ரம்யயாமிஷு அப்பனுபரேத. அது வந்து அந்த இடத்துல ரம்யயாமினிஷு. ஓகே ரம்யயாமிஷு நீஷு and then அனு பரோதமிதி. ஓகே அனு பரோதமிதி. அனுபரோதமிதி கிருஷ்ணா ஆலபோ விபோ. இதி கிராதிதம் கிருஷ்ணா மோதமோதுரை व्रजवधूनैकै कृष्णा सागमारमन् कलित कौतुको कृष्णा रासकेलने गुरुपुरी पते कृष्णा पाकि मां गतात्. அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல மட்டும் ஒரே ஒரு சின்ன கரெக்ஷன். மோத மேதுரைஹி. இதிகிராதிகம் கிருஷ்ணா மோத மேதுரைர். மேதுரைஹி அந்த இரு வந்து கோசவே புட்ட விசர்காண்ட காமாங்க. சோ மோத மேதுரைஹி. மேதுரைஹி. ஓகே ஓகே ஓகே. கிருஷ்ணாய பரபிரம்மணே. ஓகே ஸ்ரீவித்யா, whenever you are ready. कृष्णाय परब्रह्मणे नमः. भगवत मातुरपुरी प्रवेश वर्णनम्.
मथुरापुरी प्रवेशवर्णनम्। सम्प्राप्तो मथुरां दिनार्धविगमे तत्रान्तरस्मिन् वसन् आरामे विहिताशनः सखिचनैर्यातः पुरीमीक्षितुं प्रापो राजपथं चिरश्रुतिधृतव्यालोक कौतूहलस्त्री पुंसोद्यत धन्यपुण्यनिगलैः आकृष्यमाणो किं त्वत्पादद्युतिवत सराग सुभगाः त्वन्मूर्तिवद्योषितः सम्प्राप्ता विलसत्पयोदररुचो लोलाभवदृष्टिवत् हारिण्यस्त्वदुरस्थलीवदयिते मन्दस्मितप्रौढिवत् नैर्मल्योल्लसिताः कचौगरुचिवत राजत्कलापाश्रिताः तासामाकलयन्नपाङ्गवलनैः मोदं प्रहर्षाद्भुतव्यालोलेषु जनेषु तत्र रजकं कञ्चित् पटीं प्रार्थयन् कस्ते दासयति राजकीयवसनं याहीति तेनोदितः सद्यस्तस्य करेण शीशमहृताः सोऽप्यापपुण्यां गतिम्। Third line, so, Vidya, dasyati, not dasayati, not a full stop. It's is. दास्यति, ओके। कास्ते दास्यति राजकीयवसनं याहीति तेनोदितः सद्यस्तस्य करेण शीशमहृताः सोऽप्यापपुण्यां गतिम्। भूयो वायकमेकमायतमितिं देशे भूयो वायकमेकमायतमतिं दोषेण वेशोचितं दाश्वासं स्वपदं निनेथ सुकृतं को वेद जीवात्मनां मालाभिस्तबकैस्तवैरपि पुनर्मालाकृता मानितो भक्तिं तेन वृतां तिदेशितपरां लक्ष्मीं च लक्ष्मीपते कुब्जाम् अब्जविलोचनां पति पुनर्दृष्ट्वाङ्गरागे तया दत्ते साधु किलाङ्गरागमददाः तस्या महान्तं हृदि चित्तस्थामृजुतामथ प्रतियितुं गात्रेऽपि तस्या स्फुटं गृह्णन् मञ्जुकरेण तामुदनयः तावज्जगत्सुन्दरीं निश्चितवैभवास्तव विभो नात्यन्तपापा जनाः यत्किञ्चित् ददते स्म शक्त्यनुगुणं ताम्बूलमाल्यादिकं गृह्णानः कुसुमादिकिञ्चन तदा मार्गे निबद्धाञ्जलिं गृह्णन् कुसुमादिकिञ्चन तथा मार्गे निबद्धाञ्जलिः नातिष्ठं भतः यतोऽद्य विपुलाम् आर्तिं व्रजामि प्रभो एष्यामीति विमुक्तयापि भगवन् आलेपधात्र्यातया दूरात् कातरया निरीक्षितगतिः त्वं प्राविशो गोपुरम् आघोषानुमितत्वदागममहाहर्षो लसेत्तेवकी वक्षोज प्रगलत्पयोरसमिषात् त्वत्कीर्तिरन्तर्गता आविष्टो नगरी महोत्सववती कोदण्डशालां व्रजन् माधुर्येण नु तेजसानुपुरुषैः दूरेण दत्तान्तरः
श्रुग्भिर्भूषितम श्रग्भिर्भूषितमर्चितं वरदनु मातेति वादात् पुरः प्रागृह्णः समरोप्य किल समाक्राक्षीरभङ्गश्री श्रीरापि समाक्राक्षीर अभङ्गाश्रीरपि. No of saying the g there, right? So samakrakshir abhangshir api. समाक्राक्षीर अभंग चलना लिया. You're using the letter g there. There's no g there. Abhangshir. समाक्राक्षी अभङ्गश्रीरपि. Yeah. श्वकं क्षपणोत्सवस्य पुरतः प्रारम्भतु योपमशापत्वं समहाध्वनिस्तव विभो देवान् रोमाञ्चयत्. कंस्यस्यापि च वेपतुस्तुदितः कंसस्यापि च वेपुतुस्तदुदितः कोदण्डखण्डद्वयी चण्डाभ्याहतरक्षिपुरुषरवैः उत्कूलितो भूत्वया शिष्टैर्दुष्टजनैष्टदुष्टमहिमा प्रीत्या च भीत्या ततः सम्पश्यन् पुरसम्पदं प्रविचरन् सायं गतो वाटिकां श्रीदाम्ना सह राधिका विरहजं खेदं वदन् प्रस्वपन् आनन्दन्नवतारकार्यघटना वातेश संरक्ष माम्. श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः. Very good. Just one, the 10th or small correction. First line, Janaischa Drishta Mahima, not Dushta Mahima. Okay, sorry. Okay. Okay, very good. I know this 74 and 75 are definitely tough chapters, right? So, all right. So, we'll just look to finish 75, right? And then if we have time, we can maybe do review of any chapters, right? Okay, stanza 1. प्रातः संत्रस्त भोजक्षितिपति वचसा प्रस्तुते मल्लतूर्ये संगे राज्ञां च मंचानभिययुषि गते नन्दगोपेऽपि हर्म्यं कंसे सौधादिरूढे त्वमपि सह बलः सानुगश्चारुवेशो रङ्गद्वारं गतो भूः कुपितकुवलया पीडनाघावलीढम्. So prataha, so put the is there. Pratas santrasta bhoja kshiti pati vachasa, comma, prastute malla turye, comma, sange ragnyam cha manchan abhiyayushi. If you want to break it, manchan abhiyayushi, comma, gate nanda gopepi harmyam. Harmyam. प्रातः संत्रस्त भोजक्षितिपति वचसा प्रस्तुते मल्लतूर्ये संगे राज्ञां च मंचानभिययुषि गते नन्दगोपेऽपि हर्म्यम्. प्रातः संत्रस्त भोजक्षितिपति वचसा प्रस्तुते मल्लतूर्ये संगे राज्ञा च मंचानभिययुषि गते नन्दगोपेऽपि हर्म्यम्. प्रातः संत्रस्त भोजक्षितिपति वचसा
प्रस्तुते मल्लतूर्ये संगे राज्ञा च मञ्जा नबिययुषि गते नन्दगोपेऽपि हर्म्यम् प्रातः सन्त्रस्तभोजक्षितिपतिवचसा प्रस्तुते मल्लतूर्ये सङ्गे राज्ञां च मञ्चान् अभिययुषि गते नन्दगोपेऽपि हर्म्यम् प्रातः सन्त्रस्तभोजक्षितिपतिवचसा प्रस्तुते मल्लतूर्ये संगे राज्ञां च मञ्चान् अभिययुषि गते नन्दगोपेऽपि हर्म्यम् कंसे सौधाधिरूढे, comma, त्वमपि सहबलः, so put is sahabalas, sanugash charuveşo, comma, rangadwaram gato bhuhu, and then a comma again, kupita kuvalayapida. That kuvalayapida is one word, it's the name of the elephant. So kupita kuvalayapida naga validham. कंसे सौधाधिरूढे त्वमपि सहबलः सानुगश्चारुवेशो रङ्गद्वारं गतो भूः कुपितकुवलया पीडनागावलीढम् कंसे सौधाधिरूढे त्वमपि सहबलः सानुगश्चारुवेशो रङ्गद्वारं गतो भूः कुपितकुवलया नागावलीढम् कंसे सौधाधिरूढे त्वमपि सहबलः सानुगश्चारुवेशो रङ्गद्वारं गतो भूः कुपितकुवलया पीडनागावलीढम् कंसे सौदाधिरूढे त्वमपि सहबलः सानुगश्चारुवेशो रङ्गद्वारं गतो भूः कुपितकुवलया पीडनागावलीढम् कंसे सौदाधिरूढे त्वमपि सहबलः सानुगश्चारुवेशो रङ्गद्वारं गतो भूः कुपितकुवलया पीडनागावलीढम् Answer to पापिष्टापेहि मार्गात् धृतमिति वचसा निष्ठुरक्रुद्धबुद्धेः अम्बष्टस्य प्रणोदाधरिगजवजुषा हस्तिना गृह्यमाणः केलीमुक्तोत गोपीकुचखलशचिरस्पर्धिनं कुम्भमस्य व्याहत्यालीयतास्त्वं शरणभुवि पुनर्निर्गतो वल्गुहासी. So papishtha pehi margad drutamiti vachasa, comma, nishtura kruddha buddhehe. So put a visarga at the end of that line in the comma, nishtura kruddha buddhehe, comma. Next la ra, if you have rambashtasya, make it into ambashtasya. Ra becomes a ambashtasya. Next word, if you want to break it, you can break it into pranodat adika, or you can say the pranodadhadika. You can say it together, or pranodat adika java jusha, comma, hastina grihyamanaha. Papishta pehi marga drutamiti vachasa nishtura kruddha buddhehe अम्बष्ठस्य प्रणोदादधिगजवजुषा हस्तिना गृह्यमाणः. पापिष्टापेहि मार्गात् द्रुतमिति वचसा निष्ठुरक्रुद्धबुद्धेः अम्बष्टस्य प्रणोददाधधिगजवजुषा हस्तिना गृह्यमाणः. Underline pranodat adhika javajusha. Can you just say that word again? Okay, pranodadadhika javajusha. Yeah, I mean if you are saying, yeah, that's also good. Pranodad adhika
That is easier. Javajusha. That is saying that Okay. will be easier. So Okay. पापिष्टा पेहि मार्गात् द्रुतमिति वचसा निष्ठुरक्रुद्धबुद्धे अम्बष्टस्य प्रणोददात् अधिकजवजुषा हस्तिना गृह्यमाणः I feel like you're saying one extra there. प्रणोदात् अधिकजवजुषा. Okay, that's correct. पापिष्टापेहि मार्गात् द्रुतमिति वचसा निष्ठुरक्रुद्धबुद्धेः अम्बष्टस्य प्रणोदात् अधिकजवजुषा हस्तिना गृह्यमाणाः पापिष्टापेहि मार्गात् द्रुतमिति वचसा निष्ठुरक्रुद्धबुद्धेः अम्बष्टस्य प्रणोदात् अधिकजवजुषा हस्तिना गृह्यमाणाः माणः. Yeah, that's what I was going to correct. You're saying manaha. Keli muktota, and then a comma. Gopi, long e, gopi, kucha, kalasha, chira, spardhinam, kumbhamasya, comma. Vyahatya liyatastvam, and that's one full word. So vyahatya liyatastvam, charana bhuvi, comma, punar nirgato valgu hasi. Kehi muktot gopi kucha khalasha chiraspardinam kumbhamasya vyahatyali yathastvam charana bhuvi punar nirgato valguhasi. केली मुक्तोत गोपी कुच कलश केली मुक्तोत गोपी कुच कलश चिरस्पर्धिनं कुम्भमस्य व्याहत्यालीयतास्त्वं चरणभुवि पुनर्निर्गतो वल्गुहासि केली मुक्तोत गोपी कुच कलश चिरस्पर्धिनं कुम्भमस्य व्याहत्यालीयतास्त्वं चरणभुवि पुनर्निर्गतो वल्गुहासि केलीमुक्तोत गोपीकुचकलशचिरस्पर्धिनं कुम्भमस्य व्याहत्यालीयतास्त्वं चरणभुवि पुनर्निर्गतो वल्गुहासि केलीमुक्तोत गोपीकुचकलशचिरस्पर्धिनं कुम्भमस्य व्याहत्यालीयतास्त्वं चरणभुवि पुनर्निर्गतो वल्गुहासि. Stanza 3. Hasta prapyopyaghamyo jhatiti munijanasyev dhavan gajendram क्रीडन्नापात्य भूमौ पुनरभिपततस्तस्य दन्तं सजीवं मूलादुन्मूल्य तन्मूलगमहितमहामौक्तिकान्यात्ममेत्रे प्राधास्त्वं हारमेभिर्ललितविरचितं राधिकायै दिशेति. हस्त प्राप्योप्य गम्यो झटिति मुनि जनस एव धावन गजेन्द्रम क्रीडन नापात्य. It's क्रीडन आपात्य, but double न comes there. So क्रीडन नापात्य भूमौ पुनर अभिपततस or punar abhipatatas together. If you want to break it, punar abhipatatas tasya dantam sajivam. Hasta prapyopyaghamyo jhatiti munijanasyev dhavan gajendram क्रीडन्नापात्य भूमौ पुनरभिपततस्तस्य दन्तं सजीवम्. हस्तप्राप्योऽप्यगम्यो झटिति मुनिजनस्येव धावन् गजेन्द्रं क्रीडन्नापात्य भूमौ
पुनरपि पततस्तस्य दन्तं सजीवम् हस्तप्राप्योऽप्यगम्यो झटिति मुनिजनस्येव धावन् गजेन्द्रं क्रीडन्नापाद्य भूमौ पुनरपि पततस्तस्य दन्तं सजीवम् हस्तप्राप्योऽप्यगम्यो झटिति मुनिजनस्येव धावन् गजेन्द्रं क्रीडन्नापाद्य भूमौ पुनरपि पततस्तस्य दन्तं सजीवम् हस्तप्राप्योऽप्यगम्यो झटिति मुनिजनस्येव धावन् गजेन्द्रं क्रीडन्नापाद्य भूमौ पुनरपि पततस्तस्य दन्तं सजीवम् मूलाद् उन्मूल्य तन्मूलघ महित महा मौक्तिकान् यात्म. That is, you have to say that together. This is mautikani atma. So mautikān yatma mitre, and then put a plus, pradastvam, and then a comma. So mulad unmulya kapran comma, then after pradastvam comma, haramebhir lalita virachitam radhikayai disheti. Mulad unmulya तन्मूलगमहित महामौक्तिकान्यात्ममेत्रे प्राधास्त्वं हारमेभिर्ललितविरचितं राधिकायै दिशेति. मूलादुन्मूल्य तन्मूलगमहितमः. Yes. Mulad unmulya, and then there is a pause. Okay. Mulad unmulya तन्मूलगमहितमः मौक्तिकान्यात्ममित्रे प्रादास्त्वं हारमेभिर्ललितविरचितं रौदिकायै दिशेति. Radhikaयै I think Radhikaयै disheti. Yeah. Okay. Mulad unmulya तन्मूलगमहितमः मौक्तिकान्यात्ममित्रे प्रादास्त्वं हारमेभिर्ललितविरचितं राधिकायै दिशेति. मूलाद् उन्मूल्य तन्मूलगमहितमः मौक्तिकान्यात्ममित्रे प्राधास्त्वं हारमेभिर्ललितविरचितं राधिकायै दिशेति. मूलादुन्मूल्य तन्मूलगमहितमः मौक्तिकान्यात्ममित्रे प्राधास्त्वं हारमेभिर्ललितविरचितं राधिकायै दिशेति. Stanza 4. गृह्णानं दन्तमंसे युतमतहलिना रङ्गमङ्गाभिषन्तं त्वां मङ्गल्याङ्गभङ्गीरवसहृतमनोलोचना वीक्ष्यलोकाः. हंहो धन्यो हि नन्धो नहि नहि पशुपालाङ्गनाः नो यशोधा नो धन्येक्षणा स्मस्त्रिजगति वयमेवेति सर्वे शशंसुः. So गृह्णानं दन्तमंसे comma युतमथ हलिना रंगम अंगा विशंतम. If you want to break it, rangam anga vishantam, comma tvam mangalyang, one word, mangalyang bhangi rabhasa hrita mano lochana vikshya lokaha. So there's no pause there. Krihnanam dantamamse yutamata halina rangamanga vishantam tvam mangalyanga bhangi rabasakrita mano lochana vikshya lokaha. Ajay, short question. Grihnanam no potre ich mela ich nu potre. It's a half ihda, not a full her. So grih adu vandu sollumbodhu it's like you still say the half her but not the full her. Grih appadi solla mudiyadhu. Say grihna, just to light avladha.
Okay. Okay, but it is grah, and the graha, the root word is graha. Graha means to hold or to capture. So when you say grahanam, eclipse, right? So it's like capturing or shadowing, right? That's why it's grahanam. Adhe mari grihnanam is to carry. So essentially that's what it means, holding or capturing. The root word is grah. Okay. Yeah, thank you. गृह्णानं तन्तमंसे युतमथ हलिना रङ्गमङ्गा विशन्तं त्वां मङ्गल्याङ्गभङ्गीरभसहृतमनोलोचना वीक्ष्य लोकाः गृह्णानं दन्तमंसे युतमथ हलिना रङ्गमङ्गा विशन्तं त्वां मङ्गल्याङ्गभङ्गीरभसहृतमनोलोचना वीक्ष्य लोकाः गृह्णानं दन्तमंसे युतमतहलिना रङ्गमङ्गाविशन्तं त्वां मङ्गल्याङ्गभङ्गीरभसकृतमनोलोचना वीक्ष्य लोकाः गृह्णानं दन्तमंसे युतमतहलिना रङ्गमङ्गाविशन्तं त्वां मङ्गल्याङ्गभङ्गीरभसकृतमनोलोचना वीक्ष्य लोकाः Hamho dhanyo hi nando, comma, nahi pashupalanganaha. Put a visarga if you don't have it. Pashupalanganaha. And then put a comma again. So the meaning, if you listen to it, the one I had sent, they're actually debating amongst themselves who is the most fortunate. So some people are saying Nanda Gopa is the most fortunate because to have produced, like a son like Krishna. Then some people are saying, no, it's not Nanda Gopa, it is the Pashupalanganaha, the Gopas who actually grew with him. They are so fortunate that he actually grew with them. Then some people are saying, no, it's not them. At the end of the day, Yashoda is the most fortunate because she's the one who actually brought him up. But then eventually people say, no, you know what? It's not all of them. It's Dhanyekshana, the Dhanyekshana Smas Trijagati. The people of all the three worlds are actually the fortunate one because you are having access to a person like this. Everybody is praising. So that's why we're kind of putting the pause at each of that to say that. So Hamho Dhanyo hi Nando, comma, Nahi Pashupalanganaha, comma again, no Yashoda, comma, no literally means no only. So no Dhanyekshana ha is there. So put a is there. Dhanyekshana's smas trijagati, comma, vayame veti sarve shashamsuhu. Hamho dhanyo hi nando, nahi pashupalanganaha, no yashodha, no dhanyekshana smas trijagati, vayame veti sarve shashamsuhu. हम हो धन्यो हि नंदो नहि पशुपालांगनाः नो यशोदा नो धन्येक्षणा स्मस्त्रिजगति वयमेवेति सर्वे शशंसुः हम हो धन्यो हि नंदो नहि पशुपालांगनाः नो यशोदा नो धन्येक्षणा स्मस्त्रिजगति वयमेवेति सर्वे शशंसुः ராஜேஷ் நீங்க இதோட மீனிங் அனுப்பிட்டேளா 74 தான் நான் லிசன் பண்ணேன் அப்படியே அனுப்பிச்சிருப்பேனே சரி நான் பார்க்கறேன் if not I'll send it. I thought I sent it already. Okay. It's also there in that Google Drive. It should be there, but I will send it anyways. I thought I sent it. Yeah. சரி நோ இங்கிலீஷும் சான்ஸ்கிரிட்ல இருந்து வந்திருக்கு போல இருக்கு. ஆமா. हम हो धन्यो हि नंदो नहि पशुपालांगनाः नो यशोदा नो धन्येक्षणा स्मस्त्रिजगति वयमे वेति सर्वे शशंसुः हम हो धन्यो हि नंदो
नहि पशुपालाङ्गनाः नो यशोदा नो नोदन्ये क्षणास्मस्त्री जगति वयमे वेति, right? वयमे वेति सर्वे शशंसुः. அந்த சம்ஷுவா அந்த இது விசர்க்க உண்டா இல்ல Shamsuhu, Shashamsuhu. சம்ஷுஹு. Stanza 5. Purnam Brahmaiva Sakshat Niravadi Paramananda Sandra Prakasham Gopeshuttum Vyalasihi Nakhalu Bahujanais Tavada Vedito Bhuhu Drishtva Tattvam Tadedham Pratamam Upagate Punyakale Janoghaha Purna Nanda Vipapa Sarasama Bijaguhu Tvatkritani Smrithani. So Purnam Brahmaiva Sakshat. If you have a double na there and a ni, so first remove that off and put Sakshat, it there first, and then a comma, Sakshat, comma. Next is Niravadi, just one ni there. So Niravadi Paramananda Sandra Prakasham, comma. Gopeshu Tvam Vyalasihi. So put a visarga there, Vyalasihi, comma. And the na on top of the na, if you have a ir, remove the top. So na khalu bahu janais tavad avedito bhuhu. It's tavad avedito abuhu, 3 words, but you can say that together. Tavad avedito bhuhu. Purnam Brahmaiva Sakshat Niravadi Paramananda Sandra Prakasham Gopeshu Tvam Vyalasihi Nakhalu Bahujanais Tavada Vedito Bhuhu. Purnam Brahmaiva Brahmaiva danadu. And again the half is coming, right? Brahmai, but you don't have to say in the full chola venda, but just like Brahmaiva, yeah. Purnam Brahmaiva Sakshat Niravadhi Paramananda Sandra Prakasham Gopeshu Tvam Vyalasihi Nakhalu Bahujanais Tavada Vedito Bhuhu. Purnam Brahmaiva Sakshat Niravadhi Paramananda Sandra Prakasham Gopeshu Tvam Vyalasihi Nakhalu Bahujanais Tavada Vedito Bhuhu. Purnam Brahmaiva Sakshat Niravadi Paramananda Sandra Prakasham Gopeshu Tvam Vyalasihi Nakhalu Bahujanais Tavada Vedito Bhuhu. Purnam Brahmaiva Sakshat Niravadi Paramananda Sandra Prakasham Gopeshu Tvam Vyalasihi Nakalu Bahujanais Tavada Vedito Bhuhu. Drishtvat Tvam Tadedham, and then put a comma after Tadedham. Pratamam Upagate, if you want to break it, Pratamam Upagate, Punyakale Janoghaha, comma, Purna Nanda Vipapaha is there, so put a is, Vipapas, Sarasam Abhi, if you want to break it, Sarasam Abhi Jaguhu, and the is that you have after gu, remove it and put a visarga. So Sarasam Abhi Jaguhu, comma, Tvat Kritani Smritani. Drishtva Tattvam Tadedham Pratamam Upagate Punyakale Janoghaha Purnananda Vipapa Sarasama Bijaguhu Tvatkritani Smritani. Drishtva Tattvam Tadedham Pratamam Upagate Punyakale Janoghaha Purnananda Vipapa Sarasama Bijaguhu Tvatkritani Smritani. Drishtva Tvam Tadedam Pratamam Upagate Punyakale Janoghaha
पूर्णानन्दा विपापा सरसमभिजगुः त्वत्कृतानि स्मृतानि. So because the first word drishtvat, not tha. I think you're saying tha. दृष्ट्वाथ Yeah. त्वाम्. Yeah. Okay. दृष्ट्वा तत्त्वां तदेदं प्रथममुपगते पुण्यकाले जनौगाः पूर्णानन्दा विपापा सरसमभिजहुः Jagu. त्वत्कृतानि स्मृतानि दृष्ट्वा तत्त्वां तदेदं प्रथममुपगते पुण्यकाले जनौगाः पूर्णानन्दा विपापा सरसमभिजहुः त्वत्कृतानि समृतानि. No. समृतानि Smritani. சம்ருத்தானின்னு இருக்கு புக்ல ஆக்சுவலி. Oh, okay. So yeah, just change it. தான் வரும் இல்லையா? Smritani. Tvat kritani smritani. Okay. And you're right. I haven't sent the meaning. I just forgot to send. So No problem. Stanza 6. ராஜேஷ், அது திருஷ்டுவாத அது வந்து த இல்லையா, அதனால தான் நான் அப்படி சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, அதுக்கு அது வந்து அது you're saying தா அப்படி சொல்ற மாதிரி கேக்குறது. ஓகே ஓகே. அப்புறம் அந்த ஸ்மிருதானில நீ வந்து ஸ்மால் நீ தான். Small knee. I think you said smritani. Then I was going to correct it the second time, but then yeah, you said some smritani already. So yeah, smritani. Stanza 6. Chanuro mallavirastadanu nrupagiha mushtiko mushtishahi tvam ramam chabipede jhata jhatiti mito mushtipatati ruksham उत्पाता पातना कर्षण विविधरणान्यासतां तत्र चित्रं मृत्योः प्रागेव मल्ल प्रभुरघमदयं भूरिशो बन्धमोक्षान्. चाणूरो मल्लवीरस्तदनु नृपगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामं चाभिपेदे छट झटिति मितो मुष्टि पाताति रूक्षम. चाणूरो मल्लवीरस्तदनु नृपगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामं चाभिपेदे झट झटिति मितो मुष्टि पाताति रूक्षम. चाणूरो मल्लवीरस्तदनु नृपगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामं चाभिपेदे जट जटिति मितो मुष्टिपाताति रूक्षम्. चाणूरो मल्लवीरस्तदनु नृपगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामं चाभिपेदे जट जटिति मिथो मुष्टिपाताति रूक्षम्. चाणूरो मल्लवीरस्तदनु नृपगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामं चाभिपेदे जठ जटिति मिथो मुष्टिपाताति रूक्षम्. चाणूरो मल्लवीरस्तदनु नृपगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामं चाभिपेदे जठ जटिति मितो मुष्टिपाताति रूक्षम्. Utpata patana. So in the next word on the utpata, apatana, akarshana, 3 words are there, so you can't separate it that way. So utpata patana karshana, adu varikku you have to say it together only. So utpata patana karshana vividha ranan yasatam. If you want to maybe cut it there, vividha ranan yasatam tatra chitram, and then comma. So there's no pause in that full line. Then mrityoho is there, put a if. Mrityo prageva malla prabhura ghamadayam comma bhurisho bandha mokshan.
So here is where they're fighting with the Chanura and Mushtika. So here, and I'm explaining this in the meaning as well. But anyway, and the Krishna is fighting with Chanura. What's happening is he's holding him, right? Krishna is holding him and hugging him. So here Bhattaripad is saying that by putting him in bondage, by hugging him, what you are actually doing is you're actually liberating him, right? Because by hugging the Lord himself, you're actually getting liberated. So while you're actually holding him in bondage, you're liberating. But the Chanura is trying to get himself away, free himself. And by freeing himself, he's actually getting into bondage by not being with you. He's just saying the opposite of what's actually happening there. Anyway, so Utpata Pata, okay, we already said that. So Bhurisho Bhanda Mokshan. Utpata Patana Karshana Bibidharananya Sadam Tatra Chitram Mrityo Pragheva Malla Prabhuraghamadayam Bhurisho Banda Mokshan. Utpata patana karshana vividharananyasatam tatra chittam mrityo pragena malla prabhuragamadayam bhurisho bandha mokshan. The last line Prageva. Ama, na Okay. tapasana first Ravi when I was doing with you. Utpata patana karshana vividharananya, sorry. Utpata patana karshana vividharananyasatam tatra chitram mrityo prageva malla prabhuragamadayam bhurisho bandhamokshan. Utpata patana karshana vividharana Utpata patana karshana vividhara nanyastam tatra chitram mrityo prageva malla prabhuragamadayam bhurisho bandha mokshan. So the third line, the problem is, the challenge also is, and the vividha is one word, okay? After that, it's ranani asatam, okay? So another it's rananyasam. The rananyasatam is together because it's two words merged together, right? So it's not easy to quite say that. So in the utpata patana karshana vividharananyasatam, and then you just try to say it together, that's all. Okay, I'll try. Utpata patana karshana vividharanan yasatam tatra chitram mrityo prageva malla prabhuragamadayam bhurisho bandha mokshan. The ranan kapram, just make sure you're not pausing, because the yasatam is not the word. It's ranani and asatam, right? Okay. So and the ranan yasatam is together. Vividharanan yasatam tatra. Yeah, something like that. Yeah, exactly. Okay. Stanza 7. Hadikashtam kumarau sulalita vapushau mallavirau kathorau nadrakshyamu vrajamastwaritamiti jane bhashamane tadhanim chanuram tam karod brahmana vigaladasum potayamasitorvyam pishto bhun mushtiko pidrutamata halina nashta shishtai dhadhave. So in the next two stanzas, and then the movies, like it happens in the movies, when everybody gives up and everybody starts going away, then Chanura and this thing, they eventually they get killed in this stanza. And of course, 8 is Kamsavadam. So ha dik kashtam kumarau sulalita vapushau, comma malla virau kathorau, comma na drakshyamo vrajamas Tvaritam iti, comma, jane bhashamane tadanim. Hadikashtam kumarau sulalita vapushau mallavirau kathorau na drakshyamo vrajamas tvaritam iti jane bhashamane tadanim. Hadikashtam kumarau sulalita vapushau
मल्लवीरौ कठोरौ न द्रक्ष्यामि व्रजामस्त्वरितमिति जने भाषमाणे तदानीम्. Second line, na drakshyamo. Okay. Not me. हाधिकष्टं कुमारौ सुललितवपुषौ मल्लवीरौ कठोरौ न द्रक्ष्यामो व्रजामस्त्वरितमिति जने भाषमाणे तदानीम्. हादृक्कष्टं कुमारौ सुललितवपुषौ मल्लवीरौ कठोरौ नाद्रक्ष्यामो व्रजामस्त्वरितमिति जने भाषमाणे तदानीम्. See, and the twarita miti kapram, there is a pause. Okay. Miti kapram pause. Pause. And then not na drakshyamo. Second line. Na drakshyamo. Short. Okay. हादृक्कष्टं कुमारौ सुललितवपुषौ मल्लवीरौ कठोरौ न द्रक्ष्यामो व्रजामस्त्वरितमिति जने भाषमाणे तदानीम्. Chanuram tam karodbrahmana bigala dasum, comma, potaya masitorvyam. Again, that's also very hard to break that word. So potaya masitorvyam, comma, pishto bhun mushti kopi drutamata halina, comma, nashta shishtair dhadhave. Chanuram tam karod brahmana vigaladasum potayamasitorvyam pishto bhun mushtikopi drutamata halina nashta shishtair dhadhave. चाणूरं तं करोद् ब्राह्मण विगलदसुं पोतयामासितोर्व्यां पिष्टो भून्मुष्टिकोऽपि द्रुतमतहलिना नष्टशिष्टैर्दधावे. चाणूरं तं करोद् ब्राह्मण विगलदसुं पोतयामासितोर्व्यां पिष्टो भून्मुष्टिकोऽपि द्रुतमतहलिना नष्टशिष्टैर्दधावे. चाणूरं तं करोद्ब्राह्मण विगलदसुं पोतयामासितोर्व्यां पिष्टो भून्मुष्टिकोऽपि द्रुतमतहलिना नष्टशिष्टैर्दधावे. चाणूरं तं करोद्ब्राह्मण विगलदसुं पोतयामासितोर्व्यां पिष्टो भून्मुष्टिकोऽपि द्रुतमतहलिना नष्टशिष्टैर्दधावे. Stanza 8. This stanza is a little, it's a tough stanza than that. Kamsas samvarya turyam khalamatiraviden karyamavyan pitrum stanahantum vyaptamurte stavacha samashishad dhuramutsaranaya prushto dushthoktibhisthvam garuda ibagirim mancha manchanudanchat khadga vyavalgadus sangrahamapi chahatat pragrahi raugrasenim. So kamsaha, so put the is kamsas samvarya turyam, comma, khala matiravidhan karyam aryan. If you want to break it, karyam aryan pitrum. If you have only one r, then put a double r, because some books have double r. So pitrum stan ahantum. So on the next word, you have to join it with that, put a plus and join it with the next line. So some books have it as pitrum sta nahantum, right? So if you have it that way, then you just join it together. It becomes pitrum stan ahantum. Okay, just joining it essentially. Rajesh, ஒரு question. அந்த பித்ருன் அதுல வந்து டபுள் ரூன் எல்லாம் எங்க வரும்? டபுள் ரு. அதான் pitrum stan. பித்ருன். Okay. With double ru. Okay. Double ru.
So pitru, இதுல வந்து என்ன போட்டிருக்குன்னா ம். பிதன்ருஸ்தான் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. அதான். பித- பித்த அந்த பித்த ரிஸ்தா அது வந்து அது ஜாயின் ஆகிறதுனால பித்ரு ஆயிடுறது. அது பித்த பிளஸ் ரின் அப்படி. Okay. புரியல ராஜேஷ். ஓகே, இல்ல see அந்த வேர்டு வந்து உங்களுக்கு வந்து பித்த பிளஸ் ரின் தான் அந்த வேர்டு. ஓகே But when you join it becomes pitran, right? ஓகே. அப்ப நான் தனியா பித்ருன்ஸ்தான் அப்படின்னு ஆமா. பித்ருன்ஸ்தான் போடணும். இல்ல அத பித்ரன் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். பித்ரன் ஸ்தான். ஓகே ஓகே. Okay. So the pitrum stan ahantum, and the next word and the nahantum, the next line is clear, so that becomes ahantum. So essentially you're saying that line with the word with the next line. So karyam aryan pitrum stan ahantum together, okay, and then comma after that. Vyapta murtes tava cha sama shishat duram utsaranaya. Okay, so after kamsa samvarya turyam there is a comma, then after ahantum there is a comma. Okay, everything else is together. So pitranstan ahantum. ராஜேஷ் இன்னொரு டவுட். கம்சஸ் ன்னு சொன்னேல, இஸ் அங்க எனக்கு விசர்க்கமே இல்ல, கம்ச சம்பார்ய தான் இருக்கு. ஆமா, இல்ல கம்ஸ். Oh, okay, that's fine. So they just have already put the is for you, that's all. ஓகே, கம்ச சம்பார்ய தான. அப்போ இன்னொரு இஸ் கிடையாது. இன்னொரு இஸ் கிடையாது, because in some books they have kamsaha samvarya. So if you have kamsaha, then you put that is, but in your book they have automatically put that is. அவ்வளவுதான். இல்ல, கம்ச சம்பார்ய two words இருக்கு. kamsaha samvarya இருக்கும் இல்லையா? Oh, okay. அப்ப இல்ல. Okay. Okay, so then just put the is there because it's kamsaha samvarya, so we are putting an is in between. Okay. Kamsa samvarya turyam khalamatiraviden karyamaryan pitran stanahantum vyaptamurte stavacha samashishat dhuramutsaranaya. Kamsa samvarya turyam kalamatiraviden karyamaryan pitrustan nahantum vyaptamurte stavacha samashishat dhuramutsaranaya. ரெண்டு கரெக்ஷன்ஸ் பார்த்தா, ஃபர்ஸ்ட் தூரம் உச்சாரணாய, செகண்ட் லைன் end. Okay, dhuramutsaranaya. Yeah, and then the pitranstan, right? There's a dot. If you're following Sanskrit, there should be a dot on top. Yes. So and then it's an in sound there. So pitranstan. Okay. 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 Kamsa samvarya turyam khalamatiraviden karyamaryan pitrumstan. Pitrumstan ahantum vyaptamurte stavacha samashishat dhuramutsaranaya. Dhuram utsaranaya. If you're breaking it. Dhuram utsaranaya. திருப்பி இன்னொரு சொல்லவா? That's fine. You got it. Okay. Sorry, Kamshas. Shal, Sada, Kamsa. Okay. Kamsas samvarya turyam khalamatiraviden karyamaryan pitrun stanahantum vyaptamurte tavacha samashishad dhuramutsaranaya. Kamsas samvarya turyam khalamatiraviden karyamaryan pitrun stanahantum vyaptamurte tavacha samasishad dhuramutsaranaya. Your second line, Vyapta Murtehe, do you have, or do you have Vyapta Murtes? Vyapta Murtehe irukku. So you have to put a is there to join there. That Murtes. Yeah, because some books already have an is there. That's why I didn't. My book had an is already. That's why I didn't call it out. But if you have Vyapta Murtehe, right, then you put the is to join. That is Vyapta Murtes. அடிச்சேன், is போடல. ஆமா. Okay. Next.
rushto duštokti bistvam, comma, garuda iva girim mancham. So next word on the 3 words in there. Mancham, anchan, udanchat. Okay, mancham, anchan, udanchat. Those are the 3 words. But you can also say the whole thing together as well. Mancha, manchan, udanchat. That's also fine. Okay, so it's easier to say it that way actually. Mancha, manchan, udanchat, and then put a plus. Khadga, vyavalga, dussangraham api cha hatat, comma, pragrahir augrasenim. Augrasenim means son of Ugrasena, which is Kamsa. So pragrahir augrasenim. Rushto dushtokti garuda ivagirim mancha manchanudanchat khadga vyavalga dussangraham api cha hatat pragrahir augrasenim. பயங்கர டஃப்பா இருக்கு ராஜேஷ். இது வந்து the 25th chapter Narasimha Avatarama, because the khadga vyavalga is like sword and everything, right? So, in the stanza is the toughest of this chapter. Next 2 are relatively easier. So Rushto duštokti. Go ahead, Ramesh. good. Rushto duštokti bhistvam garuda iva girim manja manjanudanjat khadga vyavalga dussagrahamapi cha hatat pragrahi raugrasenim. And the dussangraha and the sang. Dussangrahamapi cha. Yeah. Okay. Api cha. Rushto duštokti bhistvam garuda iva girim manja manjanudanchat khadga vyavalga dussangrahamapi cha hatat pragrahi raugrasenim. Yeah. Rushto duštokti bistvam garudaiva girim mancha manchanudanchat khadgavyavalga dussangrahamapi cha hatat pragrahira ugrasenim. The dushtokti bistvam kapran, there's a pause. Okay, rushto dushtokti bistvam. இதுக்கப்புறம் அந்த ஹட்டாத்துக்கு அப்புறம் தான் ஒரு பாஸ். ஆமா dushtokti bistvam, there's a pause, and then after hatat. Okay. So what he's saying is just like how Garuda is then jumps on top of a mountain. Garuda iva girim, just like how the Garuda pounces on the prey which is sitting on top of the mountain. In that way, you then pounced on Kamsa, who was sitting on an elevated platform. Right? So and that comparison is simile is happening in that sentence. That's why we're saying that together. And then with the sword, you know, kill Kamsa. Anyway, go ahead. Rushto duštokti bistvam garuda iva. Rushto dušto bistvam. Rushto duštokti bistvam garuda iva girim mancha manchanudanchat khadgavyavalga dussangrahamapi cha hatat pragrahira ugrasenim. Yeah. Stanza 9. Sadhyo nishpishta sandhim bhuvi narapatimaapatya tasyoparishtat tvaya patyeta deva tvaduparipatita nakinam pushpavrishtihi kim bhrumastadhani satatamapi biya twadgadatma sabheje sayujyam twadvadhota paramiyam vasana kalaneme. So sadhyo nishpishta sandhim, comma, bhuvi narapatim apatya or narapatim apatya tasyoparishta, you have there. And then there's, if you have the rest of the stuff is the next line, so put a plus. So tasyoparishtat, put a it at the end of that line, because the next line, at least in some books, have double hafta. So you're going to move one of them to this line. So tasyoparishtat plus
Tvaya patye tadaiva, and then a comma. So one comma after sandhim, and then all the way together, one comma after tadaiva. Twadupari patita nakinam pushpa vrishtihi. Sadhyo nishpishta sandhim bhuvi narapatimaapatya tasyoparishtat tvaya patye tadaiva twadupari patita nakinam pushpa vrishtihi. Sadhyo nispishta sandhim bhuvi narapati mapatya tasyoparishtat tvaya patye tadaiva twadupari patita nakinam pushpavrishtihi. Sadhyo nispishta sandhim bhuvi narapati mapatya tasyoparishtat tvaya patye tadaiva twadupari patita nakinam pushpavrishtihi. Sadhyo nispishta sandhim bhuvi narapatim Sadhyo nispishta sandhim bhuvi narapatim apatya tasyoparishtat tvaya pate tathaiva twadupari patita nakinam pushpavrishtihi. Sadhyo nispishta sandhim bhuvi narapatim apatya tasyoparishtat tvaya pate tadaiva twadupari patita nakinam pushpavrishtihi. Kim kim brumas tadanim, comma, satatam api bhiya tvad gatatma sa bheje, put a plus sayujyam, and then put a comma after sayujyam, comma, twadva dhota parama paramiyam vasana kala nemehe. Kim kim brumastadhanim satatamapi bhiya twadgadatma sabheje sayujyam twadvadhota parama paramiyam vasana kalanemehe. Kim kim brumastadanim satatamapi bhiya twadgatatma sabheje sayujyam twadvadhota parama paramiyam vasana kalanehe. Kim kim brumastadanim satatamapi bhiya twadgatatma sabheje sayujyam twadgatotha parama paramiyam. So twadvadhota. Okay. Twadvadhota parama paramiyam vasana kalanemehe. Kim kim brumastadhanim satatamapi bhiya twadgatatma sabheje sayujyam twadvadota parama paramiyam vasana kalanemehe. See, and the brumas tadanim, there's a pause. Okay. Oh. Kim kim brumastadhanim satatamapi bhiya twadgatatma sabheje Kim kim brumastadhanim satatamapi bhiya twadgatatma sabheje sayujyam twadvadota parama paramiyam vasana kalanemehe. Stanza 10. This is a bit of a tongue twister as well. Tad bhratrunashtapishtva drutamata pitarau sannamannugrasenham kritva rajanamuchairyadukulamakhilam modayan kamadhanaihi bhaktanamuttamam chodhavamamara guror aptanitim sakayam labdva tushto nagaryam Pavanapurapate Rundime Sarvarokan. So Tat Bhratrun Ashta Pishtva. If you want to break it, Tad Bhratrun Ashta Pishtva, comma, Drutamata Pitarau
Sannaman Ugrasenam. But on the in and u it becomes a double na there. So that's why Sannaman Nugrasenam, right there. Plus, put a plus there. Kritva Rajanam Uchair Yedukulam Akhilam. 4 words there. Rajanam Uchair Yedukulam Akhilam, comma, Modayan Kamadhanaihi. So 1 comma after Pishtva and then 1 comma after Akhilam in the second line. Tadbhatru nashta Pishtva Drutamata Pitarau Sannamannugrasenam Kritva Rajanamuchair Yedukulam Akhilam Modayan Kamadhanaihi. Yad bhrat nashta, sorry. Tad bhrat, sorry. Tad bhrat nashta pishtva dhrutamata pitarau sannamannugrasenam kritva rajanumuchai yadukulam akhilam modayan kamadhanaihi. Tad bhrat nashta pishtva Dhrutamata Pitarau Sannamannugrasenam Kritva Rajanumuchai Yadukulam Akhilam Modayan Kamadhanaihi. Tadbhratrunashtapishtva Dhrutamata Pitarau Sannaman Ugrasenam Kritva Rajanamuchair Yadukulamakhilam Modayan Kamadhanaihi. Tadbhratrun Ashtapishtva Dhrutamata Pitarau Sannamannugrasenam Kritva Rajanamuchair Yadukulamakhilam Modayan Kamadhanaihi. Bhaktanam Uttamam Chodhavam Amara Guror Apta Nitim. So multiple splits there. So Chodhavam Amara Guror Apta Nitim. Okay. Sakhayam Labdwa. So put a plus. Because here he is where Bhaktanam Uttamam, the highest of your devotees, Uddhava. Right? So he meets Uddhava, who then becomes one of his greatest devotees. And this Uddhava is the Amara Guroho. He's the disciple of Brihaspati. And then you get his friendship. So Labdwa means to obtain. Sakhayam is friendship. So obtaining his friendship. And this Uddhava is the one who is then tasked with moving the idol of Krishna from Dwaraka. When Dwaraka gets flooded, Krishna then gives the idol to Uddhava and says, you transport this idol. And Uddhava has responsibility, but he's not able to. That's when he gets the help of Guru and Vayu and eventually transports the idol to Guruvayur. So this Uddhava, next chapter is a very interesting chapter where he goes and meets the Gopikas, but Uddhava then becomes his friend. That's why here, Sakayam Labdwa, comma, Tushto Nagaryam, comma, Pavana Purapate, Rundime Sarvaroghan. Bhaktanam Uttamam Chodhavam Amara Guror Aptanitim Sakhayam Labdwa Tushto Nagaryam Pavana Purapate Rundime Sarvaroghan. Rajesh, first line la kamma ve kadayadu. Labdwa la da first kamma. Ama, next line. Yeah. Bhaktanam Uttamam Chodhavam Amara Guru Raptanitam Sakhayam Labdva Tushto Nagaryam Pavana Purapate Rundime Sarvarogan. So on the line, let's the third line. Amara Guror Aptanithim. Guror Aptanithim. Apta, okay. Bhaktanam Uttamam Chodhavam Amara Guror Aptanitam Sakhayam Labdva Tushto Nagaryam Pavana Purapate Rundime Sarvarogan. I think you say Nitam or something, you're saying it's Nitim and the third. Nitim, okay. Nitim. Okay. Yeah. Okay.
भक्तानामुत्तमं चोद्धवम् अमरगुरोराप्तनीतिं सखायं लब्ध्वा तुष्टो नगर्यां पवनपुरपतेरुन्दिमे सर्वरोगान् भक्तानामुत्तमं चोद्धवम् अमरगुरोराप्तनीतिं सखायं लब्ध्वा तुष्टो नगर्यां पवनपुरपतेरुन्दिमे सर्वरोगान् श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। That completes 75. Om Sandhanandhavabodhatmakamanupamitam kaladeshavadebhyam nirmuktam nityamuktam nigamashatasahasrena nirbhasyamanam aspashtam drishtamatre punarurupurusharthatmakam brahmatattvam tattavat bhati sakshat gurupavanapure hanta bhagyam chahanan कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि।